5.5 साल से हुजूर कस्टडी। That is not relevant. In gang rape cases, even if 10 years, no consideration. In which the appellant was convicted under section 376D bill, more than 40 years, Yes. and she is mother of 3 children, my lord. So in 164, she has named another person also. अनदर पर्सन। तो मेरा यही कहना है कि अगर छोटे लाल यादव था तो उसको एफआईआर में नाम लेना चाहिए था, अगर नहीं था तो वही स्टेटमेंट उसको 164 में की गाड़ी मालिक थे कुछ, तो दोनों डिफर। और इन आर डिपोजिशन सी सेड कि मैंने छोटे लाल यादव का नाम अपने भाई के कहने पर लिया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस से लौटने के बारे में हुजूर 4 तरह का स्टेटमेंट है इनका। इन एफआईआर सी सेड कि 9:30 बजे गई और वहाँ पर सेंसलेस हो गई, और इन दी मॉर्निंग सी अवोक एंड केम हर विलेज बाय वॉकिंग एट 2 PM, दिन के 2 बजे आई घर। एफआईआर में कहती है कि वहाँ बेहोश हो गई और सुबह वहाँ से चलना शुरू की तो 2 बजे घर पहुँची, 2 PM, ये एफआईआर में है। Yes. अब माया देवी जो इसकी भाभी है हुजूर, PW10, वो कहती है कि हमको ये बताई विक्टिम, आई हैव PW10 माया देवी ओन भाभी वाइफ ऑफ श्रीधर मंडल said in her deposition in para 12 and 13 that victim चंपा देवी came at 12 PM। प्यारा who is Maya Devi? Sister in law. भाभी है उसकी, श्रीधर की वाइफ, हाँ अपनी भाभी है। हाँ प्यारा 12 and 13 रात को 12 बजे। हाँ, कि 12 बजे रात में यही छोड़ गया अपीलांट जी। तुरंत बाद में 8:30 बजे घर घटना के तुरंत बाद 8:30 बजे घर वापस आ गई। मिस्टर बच्चन जी ओझा। My lord, on last occasion I argued this case, and your lordship told me to, on the point of contradiction, brought some judgment, my lord. I have brought, my lord. My lord, this is a case. No, we forgot This is what a had happened this on is the a last occasion. case, my lord, in which the appellant was convicted under section 376D bill. 376. Now the age of the victim is more than 40 years, my lord. She is mother More of... than? Yes, my lord. Age of the victim is? More than 40 years. Yes. And she is mother of 3 children, my lord. His? And she said in the FIR, my lord, she went along with the appellant, my lord. Yes, where is the FIR? ये कहाँ है? रिकॉर्ड दीजिए इसके एविडेंस का। Yes. For picking onion, my lord. Yes, 1 minute. In the night at night. 1 minute. We understand slowly. Go with our pace. Yes. You may be the knowing entire facts of your client's matter. We are not. Yes. This is FIR lodged by the victim. Yes. What from this FIR? What do you want to show? My lord, I want to show some contradictions in the 8/5 of the 2017. victim Yes. and others. My lord, the victim, Which portion of the my lord, FIR? on the point of returning, Which portion of the FIR should be seen by us? Which portion of the FIR? which in the FIR, my lord, Yes. he told 2 persons' name. One the appellant, Read the concern. and the other is the owner of. FIR पढ़िए या जे FIR पढ़िए, कहाँ पे है वो? FIR में पढ़िए फिर से, कहाँ पर है वो? Yes. प्याज छाटने के लिए जल्दी चलो, इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है। इस वजह से पंकज मंडल के कहने पर मैं गाड़ी की केबिन में बैठ गया। गाड़ी में शी नेम्ड जस्ट अदर पर्सन, मतलब छोटे लाल यादव, और इन द डिपोजिशन शी सेड कि मैंने छोटे लाल 164. Where is 164? 164 स्टेटमेंट मिला, दैट इज हियर, सर्टिफाइड कॉपी, एंड दैट इज द exhibit 9. So in 164 she has named another person. Another person. तो मेरा यही कहना है कि अगर छोटे लाल यादव था तो उसको एफआईआर में नाम लेना चाहिए था, अगर नहीं था तो वही स्टेटमेंट उसको 164 में की गाड़ी मालिक थे कुछ, तो दोनों डिफर। और इन हर डिपोजिशन सी सेड
कि मैंने छोटे लाल यादव का नाम अपने भाई के कहने पर लिया। कहाँ है? चंपा देवी। यस में, एक मिनट। डिपोजिशन हुजूर। हाँ, एक मिनट। हाँ, डिपोजिशन में ये हुजूर है। para 18 डिपोजिशन अभी। 1 मिनट। यस। प्लेस ऑफ ऑकरेंस से लौटने के बारे में हुजूर 4 तरह का स्टेटमेंट है इनका, 4 तरह का। फर्स्ट स्टेटमेंट हुजूर, द विक्टिम इन हर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC। 1 मिनट। हाँ, यस, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेटमेंट? She said Millard that she went along with accused persons at 8 PM on 7/5/17 and 9:30 FIR 9:30 बजे। ये हम अभी 164 का बोल रहे हैं। हाँ? कि 8 बजे गई और 4 बजे लौट के आई। 164 में कहती है कि 8 बजे गए और 4 बजे लौट के आ गई सुबह में। ये 1 मिनट है। 8 बजे रात को 8 PM। हाँ, FIR में 9:30 PM और सुबह में 4 बजे आ गई। कहाँ है? सुबह के 4 बजे। चलो, जबरदस्ती दोनों मिलकर उतरा। उसके बाद पहले पंकज मंडल फिर छोटे लाल ने बुरा छोड़कर गया, दोनों भाग गया। मुझे अगले दिन 2 बजे रात में 4 बजे इन FIR सी सेट कि 9:30 बजे गई और वहां पर सेंसलेस हो गई। और इन दी मॉर्निंग सी अवोक एंड केम हर विलेज बाय वॉकिंग एट 2 PM। दिन के 2 बजे आई घर। FIR में कहती है कि वहां बेहोश हो गई और सुबह वहां से चलना शुरू की तो 2 बजे घर पहुंची। 2 PM ये FIR में है। यस। अब माया देवी जो इसकी भाभी है हुजूर, PW10, वो कहती है कि हमको ये बताई विक्टिम। आई हैव PW10 माया देवी ओन भाभी वाइफ ऑफ श्रीधर मंडल said in her deposition in para 12 and 13 that victim Champa Devi came at 12 PM. Para 12 and 13 of PW10 माया देवी। Who is माया देवी? सिस्टर इन लॉ। भाभी है उसकी, श्रीधर की वाइफ। हाँ, अपनी भाभी है। हाँ। पैरा 12 and 13। रात को 12 बजे। हाँ, कि came at 12 PM in the night and it is the accused appellant left her by pickup van। 12 बजे रात में यही छोड़ गया अपीलांट गाड़ी से। और उसमें साफ कहती है कि ये विक्टिम ने हमको बताया। यस। अब हुजूर पारा 26 ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द चंपा देवी विक्टिम। पारा 26 में। पारा 26 जी। तुरंत बाद में 8:30 बजे घर वापस। तुरंत बाद 8:30 बजे घर वापस आ गई। शी इज PW चंपा PW1 चंपा देवी विक्टिम। घटना के तुरंत बाद 8:30 बजे घर आ गई। अब हुजूर एक बात हुजूर ने उस दिन कही थी। 1 मिनट। व्हाट वाज द टाइम ऑफ लिविंग द हाउस एज स्टेटेड बाय हर इन हर एविडेंस? उस समय मैं घर में थी तो पंकज घर में आकर प्याज चुनने के लिए बुलाया। जाने का टाइम नहीं बता रही। हाँ, यस। हाँ, अब हुजूर कि हमने कहा था कि ये पहले भी इनके साथ जाती थी काम करने के लिए, तो हुजूर ने कहा था कि अगर दिखा दीजिए तो मैं भेज दे दूंगा। हुजूर, इन द FIR शी सेड appellant came and told let us proceed soon for एक मिलर। FIR में बोला है ये एंड शी वेंट अवे बिकॉज इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है। FIR में कहती है। 1 मिनट।
इसी काम के चलते मेरे घर परिवार का भरण पोषण होता है। इस वजह से पंकज मंडल के कहने पर मैं गाड़ी के केबिन में बैठ गई विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर एक जगह कहती है हुजूर, द डिपोजिशन ऑफ विक्टिम इन पैरा 5 सेड पंकज मंडल मेरे गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है, और इसके साथ मैं बराबर काम का नहीं करती हूँ, बराबर काम नहीं करती हूँ, यानी कभी कभी करती हूँ। कहाँ पैराग्राफ? पैराग्राफ हुजूर इन पैरा 5। यस यस। वो कहती है कि बराबर नहीं, कभी कभी करती हूँ। आखिर की ये बात नहीं कहती है, लेकिन उसका अर्थ ही निकलेगा। और पैरा 14 में हुजूर कहती है कि मुझे आवेदन पढ़कर नहीं सुनाया गया है, मुझे नहीं पता कि आवेदन में क्या लिखा हुआ था। और 18 में हुजूर ने देखा है कि मेरे भाई ने छोटे लाल का नाम बताया था, तब मैंने बताया। नारायण मंडल हुजूर जो इसका हस्बैंड है, जो PW2 है, पैरा 4 पंकज मंडल केवल धर पकड़ किया, ये अपने हस्बैंड को बताई कि उसने। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? नारायण मंडल हुजूर PW2 है पैरा 4 में। पैरा 4 ऑफ नारायण मंडल। नारायण मंडल Who is नारायण मंडल? हस्बैंड है, इसका अपना हस्बैंड है। कितना PW है वो? ये PW4। PW, हाँ PW4, सॉरी PW4 PW4 है गौतम। नहीं, गीता, PW4 नारायण नहीं है मंडल। हुजूर, एक मिनट, वो तो हॉस्टाइल होगा। एक मिनट, PW2 ही है। नारायण मंडल PW2 है। PW2 हाँ, पैरा 4 में बोलता है। 1 मिनट। PW2 पैरा 4, ये दो जगह ये बात बोलता है, पैरा 4 में और पैरा 14। पैरा 4 पत्नी ने बताया पैरा 4 और 14 कि वो प्याज चुनने पंकज मंडल के साथ गई थी, जहाँ पंकज मंडल ने यस। हाँ, और हुजूर पैरा 20 में कहता है नारायण मंडल PW2, मेरी पत्नी से मंगल मंडल और श्रीधर मंडल ने यह केस कराया था। मंगल इज हर ब्रदर। हाँ, वो भाई है दोनों लोग। इन्हीं लोगों ने उसके साथ मारपीट भी किया था, दोनों के साथ, विक्टिम के साथ भी मारपीट किया था और उसके साथ भी। इसके लिए अलग से केस हुआ था। मंगल इज ब्रदर एंड हु इज दिस अनदर पर्सन? और श्रीधर भी उसका भाई है। बोथ आर ब्रदर। बोथ आर ब्रदर। 21 में हुजूर कहता है यही विटनेस PW2, श्रीधर और मंगल चोर है, कुछ भी कर सकता है। यस। हुजूर 2 डिसीजन हम लिए हैं, रिपोर्टेड है हुजूर। क्या? 2015-1 PLJR सुप्रीम कोर्ट 42। नहीं, वो बेल में हम जजमेंट नहीं देखते। जजमेंट क्या है? तब छोड़ दिया जाए। नहीं, जजमेंट इज एप्लीकेबल, अब रेशियो इज ओनली एप्लीकेबल, फैक्ट्स और नॉट। व्हाट इज द रेशियो व्हिच यू वांट? नहीं, हुजूर ने कहा था कि अगर कोई हो तो। वो 10 साल का बोला था मैंने शायद, 10 साल के बारे में। जजमेंट इन क्रिमिनल ट्रायल is hardly relevant in any case. Only what is applicable of the judgment, ratio is applicable. Yeah. So for ratio, if you can show us that gang rape evidence is to be appreciated in this manner, then that is applicable. But otherwise each case goes on its own facts. Decision is attributable to fact of that case. Yes, ratio is applicable to all cases. So Yes. if you want to cull out some ratio, then point out ratio. Otherwise on facts each criminal case is different. और बेल में ऐसे कोई डिसीजन नहीं, बेल में तो छोड़िए, आप कोई भी केस में क्रिमिनल में जजमेंट साइड करना, ये बात मुझे नहीं समझती, क्योंकि हर क्रिमिनल केस के फैक्ट्स अलग रहते हैं। जजमेंट इज एप्लीकेबल, व्हाट पोर्शन इज एप्लीकेबल? रेशियो। यस, व्हाट इज दिस ingredients of common object? What are the ingredients of common intention? This, to that extent, is okay, but on facts, what each evidence has to be now appreciated. Millard On the contrary, in rape cases, what is On the basis what of is the facts, ratio? Evidence only- is to be appreciated in broader perspective. Minor inconsistencies are to be ignored. This is the ratio in rape case, and more serious are such type of cases, gang rape. Anyway, anything else? No, ma'am. What is the doctor says? What doctor says? Doctor, nothing was found, Millard. Doctor is Millard. नहीं, फिर तो कुछ नहीं।
Yes. No injury, nothing was found. Yes. And what is the result of this trial? Two persons were put up for trial? Or? No, only one. Both were not sent up. पुलिस फाइनल दे दिया दोनों के अगेंस्ट में. No, ये इसका क्या हुआ छोटू लाल यादव? नहीं, वो सेंटअप ही नहीं हुआ. चार्जशीट? नहीं, नो चार्जशीट. वो दोनों को छोड़ दिया. चार्जशीट है दोनों कहाँ एक ही आएगा, एक पंकज मंडल एक छोटू यादव. वहाँ नहीं, जैसे दो आदमी को एक्यूज बनाया एफआईआर में, ऑनर को. कौन हो सकता है कि पंकज यादव, पंकज ये मंडल और छोटे लाल दोनों जगह अलग अलग नाम ले ली ना. 164 में ली छोटे लाल यादव का. हाँ. और एफआईआर में ली गाड़ी के ओनर का, पिकअप वैन के ओनर का. वो दोनों अलग अलग आदमी है. एक मिनट थोड़ा सा ये पॉइंट नहीं समझा मुझे. ये एफआईआर में किसका नाम लिया है? एफआईआर में मनीष नाम है उसके गाड़ी के ओनर. एफआईआर में कोई ओनर मतलब ओनर का नाम नहीं लिया है, केवल ओनर का ही है. अनआइडेंटिफाइड केवल ओनर. उसको आइडेंटिफाई कर रही 164 में छोटे लाल यादव. हाँ, और 164 में छोटे लाल का नाम लिया है. हाँ, जिसको तो पुलिस फाइनल फॉर्म कर दिया, सेंटअप नहीं किया. And that was also accepted by. Unidentified person is being described as owner of the vehicle. Okay. Yes. गाड़ी मालिक. Yes. That's all. Yes. My lord, the position of victim, my lord, for is sufficient for conviction, my lord, Yes. under section 376, my lord. Yes. Okay. This is first bail application. हाँ, for. This is the bail application, or in appeal itself it is prayer. बेल अपील में ही प्रेयर है बेल का. Yes. और first time बहुत this हो रहा है. appeal has come up for consideration of request of bail, request of suspension of sentence and release of the appellant on bail during pendency of the appeal. First of all. और 5.5 साल से जो कस्टडी. That is not relevant. In gang rape cases, even if 10 years, no consideration. First of all, the appellant is convicted of the offence punishable under section 376D of the Indian Penal Code, and he is sentenced to suffer imprisonment for life apart from imposition of fine of rupees 5,000, and in default thereof to undergo further imprisonment for 6 months. First of next para, heard. The learned counsel appearing for the applicant, appearing for the appellant. First of he argued that the evidence, evidence adduced by the prosecution is contradictory and untrustworthy. First of the prosecutrix has changed her version from time to time for suiting suiting the case of the prosecution. First of her version is not supported by medical evidence or evidence of her husband. First of it is further argued that evidence on record suggests that the prosecutrix was set up for lodging the false FIR against the accused, against the appellant. First of it is further argued that though it is alleged that the prosecutrix was subjected to gang rape, the another person who allegedly raped the prosecutrix is not even charge sheeted by police. First of hence the learned trial court has committed error in convicting the appellant of the offence punishable under section 376D capital D of the Indian Penal Code. First, as against this, the learned APPA argued that evidence of the prosecutrix is sufficient to convict the appellant. First of next para, we have considered the submission so advanced. First of we have also perused
the record and proceedings. Full stop. Next paragraph. The case held to be proved against the appellant is that of gang rape. Full stop. It is well settled that in such cases, evidence of the prosecution is required to be considered in broader perspective of the case of prosecution by ignoring minor inconsistencies. First stop. Similarly, it is also well settled that in such cases, comma, if the version of the prosecutrix is truthful, then it need not be supported by medical evidence. First stop. Next. In the case in hand, the prosecutrix has lodged the FIR on 8/5/2017, alleging that the incident took place in the night intervening 7/5/2017 and 8/5/2017. First stop. She had reported to the police that she boarded vehicle driven by appellant Pankaj Mandal for going to do labor work of grading permitted to leave grading the court, onions. First of all, she stated that another unknown person was sitting in the vehicle who may be owner of that vehicle. First of all, she further reported that she was taken to the bank of Maina River where she was subjected to rape by appellant Pankaj Mandal and another unidentified accused. First of all, that is how the crime in question came to be registered against two persons, including appellant Pankaj Mandal. First of all, next para. In her statement under section 160, next para, in her statement under section 164 of the CRPC made to the learned judicial magistrate, comma, the prosecutrix has stated that she was subjected to gang rape by Pankaj Mandal and Chotu Lal Yadav by taking her in the vehicle on the pretext of loading onions in the vehicle. First of all, she has stated to the learned judicial magistrate that both these persons have committed rape on her. And as she is a handicapped lady, she returned to her house at about 4 a.m. First of all, in the FIR, she has stated to police that she was taken at 9:30 p.m. of 7/5/2017 and she had returned to her house at 2 p.m. of the next day, that is 8/5/2017. First of all,
Thus, unidentified person became identified, one, in the statement under section 164 of CRPC made on 16th May 2017 by the prosecutrix. First one. Next para. The prosecutrix came to be examined as PW1. First one. She has not stated time of taking her by the accused. First off, however, she stated that by taking her by a vehicle near Stan of STHAN, Stan of Mahant Baba, comma, accused appellant Pankaj Mandal committed rape on her. First off, in her evidence, in her evidence before the court, she has stated that one person was accompanying Pankaj Mandal, but she has not attributed any overt act to that person. First off, her evidence does not show any community of intention of that unknown person who was with Pankaj Mandal. In her cross-examination, the prosecutrix has stated that she had told name of Chote Lal Yadav on the say of her brother. First, sir. Next para. As stated earlier, the prosecutrix in her FIR has stated that she was taken at 9:30 p.m. and returned at 2 p.m. of the next day. Whereas in her statement under section 164 of the CRPC, she has stated that she was taken at 8 p.m. and had returned at 4 p.m. 4 a.m. of the next day. First one. As against this, PW10, who happens to be sister-in-law of the prosecutrix, has stated that the prosecutrix returned in the midnight at 12 p.m. First one. In cross-examination, the prosecutrix has stated that the prosecutrix has stated that after the incident, she returned to her house immediately at 8:30 p.m. without full stop. She has not stated in her evidence before the court, the time of taking her by the appellant. First one. Next para. The case set out in the FIR is to the effect that the prosecutrix was doing the labor work of grading and loading onions for earning her livelihood, and therefore
she had boarded the vehicle of the appellant at the time of the incident from her house. Her cross-examination also reveals that she was working with appellant Pankaj Mahato, though not regularly. First one. Next. PW2 is husband of the prosecutrix. As per her version, as per his version, his wife had told him that appellant Pankaj Mandal had only caught hold of her and had embraced her. First, his evidence is to the effect that the prosecutrix has filed the FIR at the instance of her brothers Mangal and Sridhar. First of all, he described his brothers-in-law as thieves who can do anything. First of all. Next paragraph. This is the position of evidence appearing on record. First of all, the prosecutrix is not consistent in respect of her case of subjecting her to gang rape. So also the time of the incident. First, the prosecution has not explained as to why Chotelal Yadav, named by the prosecutrix in her statement under section 164 of the CRPC, is not charge sheeted. First of all, in substantive evidence before the court, the prosecutrix has not attributed any overt act to some unidentified person who was in the vehicle. First one. On these facts, one will have to examine at the time of final hearing whether the offence falls, the offence is punishable under section 376D of the IPC, and whether offence punishable under section 376D of the IPC is made out or not. First one. Next paragraph. Considering the nature of evidence available against the appellant, for the reasons noted by us in the foregoing para, we are of the opinion that the appellant deserves to be released on bail during pendency of the appeal filed by him. First, hence this order. Substantive sentence of imprisonment imposed on the appellant is suspended and he is directed to be released on bail on executing PR bond of rupees 10,000 and on furnishing surety in the like amount till disposal of the appeal. First, the appellant should cooperate this court in expeditious disposal of the appeal filed by him. First, during pendency of the appeal, realization of the fine amount is stayed. Bacho.